Welcome back, everyone. So, this is the format. Now, the revenue account starts with premium earned. So, premium earned we have got from our schedule number 1. Let us see what is the premium earned we have got. 4,27,500 and 1,40,000. So, we will write here 4,27,500 and 1,40,000. Now, what else we will have to write? We will have to write about the interest, dividend, and rent gross. Now, let us see whether these things are given in the question. It is given. Dividend is given 1 lakh, interest is given 19,000, and in the adjustment also there is accrued interest, that is again 10,000, 1,29,000 is there. But इसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो कहाँ पे दिखाए? फायर से रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट, or is this investment related to marine? Which column should we show? That is not given. So this we cannot put in the revenue account. Jo, like I had explained you in the previous lectures, that if interest, dividend and rent, we can also show in the profit and loss account, because same ही column, same ही चीजें, categories are also present in the P&L account. Now वो इसीलिए है कि ऐसे एक से ज्यादा बिजनेस होगा तो it will be difficult for us to show that where we will be putting these things. Interest है, dividend है, but उसे fire में बताए, marine में बताए, we don't know कहाँ बताए. So इसके बाद one more thing is there, profit or loss on sale or redemption of asset या इन्वेस्टमेंट. सो ये भी तो है नहीं ये क्वेश्चन में ना. इसके बाद अदर इनकम ब्रैकेट में टू बी specified, but anything of this sort is not there. So हम क्या, what we will do, we will keep it nil, because है तो भी हम यहाँ पे ऐसे bifurcation करके has not been shown. तो this total we have to put the same, because nothing else is there, only these things are there, only premium is there in the income, and this is how much, 1,40,000. Now we will go to the expenses. Under expenses we have claims incurred. So claims incurred kitna hai? Then we'll have to go and check in the schedule number 2. Schedule number 2 may we will go and check that how much is claim incurred. Claim incurred is 82,000 and 88,000. So we'll write here 82,000 and यहाँ पे it is 88,000. So claim incurred also done. Now after claim incurred, our next important note, our schedule is commission. So commission कितना मिला? Commission 40,000 and 20,000. So we'll write 40,000 and 20,000. Same way after this, the next one is operating expenses related to insurance business. This is the last schedule in the operating, I mean in the revenue account. So how much is the amount we have got total? 70,000 and 50,000. We'll write here 70,000 and what else? 50,000. So now take the total. How much are you getting? Total. How much are you getting? Take down the total. कितना आ रहा है? 82 plus 40 plus 70 is 1,92,000. Same way 88 plus 20 plus 50
This coming to how much? 1,58,000. Correct, na? 1,92,000 and 1,58,000. Now what we get will be our operating profit. So how we, अगर इसको हमने A refer किया, if this is A, and for example if this is B, how do we get it? A minus B. So कितना है? 4,27,500 minus 1,92,000. You get 2,35,500. This is the operating profit. And यहाँ पे you get a negative answer. 18,000. It is a operating loss in fire. नेगेटिव आंसर है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस है, so you're getting a negative answer here. So with this the revenue account is done. Now we have to prepare the profit and loss account. So profit and loss account के लिए what we will do, form B, that is PL. PL stands for profit and loss account. Name of the company is Perfect General Insurance Company Limited, and we have to prepare profit and loss account for year ended 31st March 2014. Here नो नीड टू प्रिपेयर टू कॉलम्स हियर. यहाँ पे ऐसे वहाँ टू कॉलम्स हमें प्रिपेयर करना है रेवेन्यू अकाउंट में फॉर द टू बिजनेसेस, दैट इज फायर एंड मराइन. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे दिस इज फॉर द कंपनी. कंपनी तो एक ही है. P&L अकाउंट वी प्रिपेयर फॉर द कंपनी एंड रेवेन्यू अकाउंट वी प्रिपेयर फॉर द बिजनेस. बट देयर इज नो शेड्यूल हियर, फिर भी हम लिखते हैं रुपीज़. So the first step in the P&L account is revenue में जो हमें मिला, revenue account में जो हमें मिला, that is operating profit और loss related to दो business से मिला है हमें, fire and marine. So how much have we got? Here we have got 2,35,500 and here we have got 18,000. So this is done. Now miscellaneous तो है नहीं. Miscellaneous से तो we have not got anything because miscellaneous business is not there. Miscellaneous business is not there. So what we will do, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में व्हाट वी विल शो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में वी हैव इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट. Interest, dividend and rent. So let us see if anything information is there in the question. If interest is there 19,000, dividend is there 1 lakh, it becomes 1,19,000. उसके अलावा there is interest accrued also 10,000. So 1,19,000 plus 10,000 becomes 1,29,000. So यहाँ पे what is there? यहाँ पे we have, if want to write we can write, show that कितना है 1 lakh plus 19,000 plus 10,000. We have total of 1,29,000. इसके अलावा any other income, that is
profit or loss on sale of investment or asset is not there. So this will be nil. Then other income also, other than apart from this, any other income is not there. Any other income to be specified is also not there. So what we will get, जब इसका total करेंगे, so we'll get total income. We will get total income. Add all this, how much are you getting? 2,35,500 minus 18,000 plus 1,29,000. Are you getting 4,46,500? 4,46,500. इसमें से we have to less the expenses. इसमें से we will have to less the expenses. And expenses में what we will do? Expenses में first one we have to show provisions other than taxation. Provisions other than taxation. So we'll write here provisions ब्रैकेट में अदर देन टैक्सेशन. कौन सा प्रोविजन है टैक्सेशन के अलावा? क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन है ना, डेप्रीसिएशन इज देयर इन द क्वेश्चन. सो 10% डेप्रीसिएशन हियर. 10% डेप्रीसिएशन निकालना है फिक्स सेट में. 90,000 का 10%. सो यहाँ पे वी कैन राइट what is there. We can write here depreciation 90,000 into 10% is coming to how much? 9,000. Anything else is given? So other than provision we have other expenses. यहाँ पे क्या आता है? Provisions में क्या आता है? Diminution in the value of investment, doubtful debts. Others में depreciation we have written. And apart from this we also write other expenses, and these other expenses are those expenses which are not related to insurance business. And other than this, यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा. अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा? हमारे पास डायरेक्टर फी है विच हैज नॉट बीन, अभी हमने सब लिखा, इनकम टैक्स और डायरेक्टर फीस के अलावा एवरीथिंग हैज बीन नोटेड डाउन. बाकी सबका फायर में जाएगा, मराइन में जाएगा करके है. पर डायरेक्टर फीस किधर जाएगा? कहीं तो उसको दिखाना है. वी कैन जस्ट इग्नोर द डायरेक्टर फी. वी हैव टू शो इट समवेयर. वी विल शो इट हियर. डायरेक्टर फीस का अमाउंट क्या है? लेट अस सी. Director fee is how much? 80,000. So we'll show here 80,000. So director fee भी हो गया. Now what we will get? We will get the total. So we'll write here total B. add ये दोनों को कितना आ रहा है? 89,000. Now what we will get is profit before tax. We will get profit before tax. That will be A minus B. To do the A minus B, 3,46,500 minus 89,000, we will get 2,57,500. इसमें से लेस करना है, इसमें से लेस करना है हमें provision for taxation. We want provision for taxation, current year provision. तो provision for taxation, taxation का तो many things are given about taxation. When we will see the question,
लास्ट ईयर प्रोविजन इज गिवन, बट हमें लास्ट ईयर प्रोविजन नहीं, हमें करंट ईयर प्रोविजन चाहिए। लास्ट ईयर प्रोविजन दिया, ओपनिंग प्रोविजन दिया है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है 60,000। नाउ वन मोर थिंग इज इट गिवन, यहाँ क्लोजिंग प्रोविजन भी दिया है। हमें पीएनएल अकाउंट में जो अमाउंट डालते हैं हमें वो चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। व्हाट वी विल डू, विल गो टू द वर्किंग नोट, उसके नीचे वी विल प्रिपेयर provision for taxation account, and we'll prepare provision for taxation account. So it will be particulars rupees, particulars rupees. So provision for taxation, liability. Liability means opening balance will be in the credit side because liability is credit balance. How much is the opening balance given? 85,000. Opening balance is 85,000. So यहाँ पे we will write 85,000। इसके बाद when income tax is paid, liability कम होगा, liability credit balance जब पे करेंगे तो कम होगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। गेटिंग माई पॉइंट, यू आर एमकॉम स्टूडेंट, सो आई अज्यूम दैट यू ऑल नो that liability provision for taxation is a liability and liability has credit balance। अब जब भी there is one more thing known as income tax paid during the year 60,000। सो जब इनकम टैक्स पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, बट क्रेडिट का ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। जब लाइबिलिटी कम होगा तो दैट इज 60,000। सो और जब पे करेंगे टैक्स तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक विल गो आउट। एंड एक और चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज द क्लोजिंग प्रोविजन। एंड क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है। अगर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर रहेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1,24,138। कितना दिया है, 1,24,138। सो 124,138। तो अब इसको बंद करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यस सॉरी गलती से एरर, 2 लाख, इट इज 1,24,138। इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 1,84,138, 1,84,138। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1,84,138। नाउ बैलेंसिंग फिगर जो भी रहेगा इट विल बी बाय P&L account, it will be by profit and loss account. This is the figure, this is the balance which is transferred to P&L account, which is coming how much? It is coming 99,138. So this is that amount which will come in the P&L account as provision for taxation, 99,138। तो जब ये लेस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज माइनस करके देखो व्हाट अमाउंट यू आर गेटिंग, 158,362, 158,362। with this the sum is